continue Babar and Humayun. We have studied about Babar and Humayun. And today we will continue Akbar. Now, please pay attention. And Akbar 1550 to 1605 CE. Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ascended the throne at the age of 14 under the guardianship of Baram Khan. Why the word is using the guardianship? Because the Akbar age was just 14 at that time, and he was not so mature to rule a country like India. That's why the Bairam Khan was deputed as his guardian. The position of Mughals was not very strong in India. Here, just mind all the words which we are using. The position of Mughals was not very strong in India, because you have already known that the Humayun was defeated by an Afghan Sirsa Suri at Chausa and Kannauj, and was forced to leave India and take refuge in Iran in 1540. After that, sorry, Amraj Sharma, what do you want to speak? Ma'am, who was Bairam Khan? Bairam Khan was guardian. He was a Muslim. Yes, sorry, Amraj Sharma. Yes. Ma'am, yes. like in Humayun's court, who was that? No, in Humayun court, I am not. We do not find any information about Bairam Khan. But while we studied about Akbar works, there we found the name of Bairam Khan. Is it clear? So Bairam Khan was, I think he was a reliable person of Mughal, and he was deputed as the guardian of Akbar. Is it clear? Yes, ma'am. Is it clear? Yes. Now, Humayun, as you know, the Humayun was defeated by an Afghan Sirsa Suri at Chausa and Kannauj, and was forced to leave India and take refuge in Iran in 1540 itself. And now, common point: after 15 years, Humayun defeated Sikandar Suri, a weak successor of Sirsa, and restored the Mughal Empire in India once again. फिर से बना दिया. But उसके बाद तुरंत ही, unfortunately, he died after sleeping from the steps of his library building at Delhi. तो अब लाइब्रेरी बिल्डिंग से जब उसकी मृत्यु हो गई, तो देन व्हाट विल हैपन? अकबर, हिज सन अकबर वाज crowned as king, and but at that was the Akbar was minor in age. He was just 14 years old at that time while he ascended the throne. तो he was minor. आप लोग तो बच्चा था, माइनर का मतलब बच्चा था. तो क्या हुआ? बैरम खान was guardian, deputed as a guardian. The position of Mughals was not very strong in India. Hemu Vikramaditya, an Indian ruler, Hemu Vikramaditya. Who was Hemu Vikramaditya? He was an Indian ruler. He had defeated the Mughals and captured Agra and Delhi. हेमू विक्रमादित्य ने उसको हराया और आगरा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया. In the second battle of Panipat, the Mughals In the second battle of Panipat, the Mughals under the leadership of Bairam Khan defeated Hemu in 1556 CE. अब पानीपत का जब दूसरी लड़ाई, देखिए, in again and again I am telling you, these wars were very important. Just imagine what will happen in India if Ibrahim Lodi defeated Babur. Then Mughal Empire should not be established in India. This was the impact of the war. What was the impact of the first war of Panipat? And what will happen if in the battle of Khanwa, Rana Sanga defeated Babur? Then the Mughal rule also should be abolished from India. But Babur defeated Rana Sanga, Babur defeated Ibrahim Lodi and established Mughal Empire in India. In the same way, in the second battle of Panipat, the Mughal defeated Hemu Vikramaditya, an Indian ruler, and re-established Mughal rule in India. These are the important wars of Indian history. Is it clear to all of you now? Yes or no? Yes or no, children? You are understanding? Yes, ma'am. कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप चैट में पूछेंगे. Yes, I will explain. और सारे लोग जिनको समझना होगा वही अपने माइक को ऑन करेंगे, अदरवाइज अपने माइक को ऑफ करके रखेंगे. ठीक है? Now, in the second battle of Panipat, the Mughals under the leadership of Bairam Khan defeated Hemu in 1556 CE. Agra and Delhi were taken back and the capital was set up at Agra. आगरा और दिल्ली वापस ले लिया गया और आगरा को कैपिटल बनाया गया. This made Bairam Khan enjoy a position of respect and power. Why all these make Bairam Khan a position of respect or power? Because
he was deputed as the guardian of Akbar, and being a guardian, he got a position of respect and power. But slowly differences developed between Akbar and Bairam Khan. Why the differences developed between Akbar and Bairam Khan? Because Akbar was the ruler and Bairam Khan was the guardian. He was not his father. He was not his related to his family. That's why Akbar started to oppose him, and Akbar do not want to follow the instructions given by Bairam Khan. That's why the differences developed between Akbar and Bairam Khan. In 1560, Bairam Khan was forced to go on pilgrimage to Makkah. In 1560, what was happened? Akbar forced Bairam Khan to go to pilgrimage to Makkah and assassinated. And he was assassinated by someone. Yes, who wants to ask a question? On the way, मार दिया गया, रास्ते में उसको मार दिया गया. The meaning of assassination मतलब मार दिया गया. Assassinated मतलब मार दिया गया. Under the Akbar, the Mughal Empire stretched from Kashmir in the north of Godavari River in the south, and from Afghanistan in the west to Bengal in the east. Akbar also conquered Gondwana, Chittor, Ranthambore, Bihar, Bengal, Kabul, Kashmir, Sindh, Deccan, and Gujarat. Now please pay attention. Give a map given on page number 122 itself, and I 122 Mughal Empire under Akbar. And you please just see Kabul means Afghanistan, Ghazni, Kandahar, Sindh. All these are areas of Afghanistan and Pakistan. At that time, these were the part of Indian territory, and all these were under the control of Akbar, Mughal rule. And they here in this देखिए इधर साउथ का जो एरिया है, गुलबर्ग से लेकर के नीचे का जो एरिया है केरल तक का, वहां तक मुगल रूल नहीं था. डेक्कन का जो हमेशा ही आप लोग पढ़िएगा, दिस एरिया इज नोन एज द डेक्कन, इंडियन डेक्कन पार्ट. सो यहाँ से मुगल लोग या कोई भी जो दिल्ली पर जिन लोगों ने राज किया, डेक्कन तक नहीं पहुंच पाते थे, और यहीं से उनका प्रॉब्लम शुरू होता था. जैसे औरंगजेब के समय जब हम लोग पढ़ेंगे तो हियर द महाराष्ट्र की तरफ छत्रपति शिवाजी, and he has created problem a lot for Aurangzeb. Yes, now and Akbar set up an Ibadat Khana at Fatehpur Sikri, where religious discussions were held every Friday evening. अब इबाबत खाना, इबाबत मतलब पूजा करने की जगह को कहते हैं. फतेहपुर सिकरी आगरा के पास ही है ये. वहाँ फतेहपुर, यू हैव स्टडीड अबाउट फतेहपुर सिकरी इन क्लास 5. आर यू रिमेम्बरिंग? तो उस वही फतेहपुर सिकरी वही. ये स्टार्टेड दीन इलाही, डिवाइन फेथ. डिवाइन मतलब जो दिव्य शक्ति, डिवाइन का मतलब होता है दिव्य शक्ति पर विश्वास करना. इन 1582 by blending the good points of all religions like Hinduism, Christianity, Jainism and other faith with Islam. Islam के साथ blend करके, मतलब as you know that the Mughals were the followers of Islam, and in India where they came and defeated the Indian rulers. But the religion of Indian religion was Hinduism, and the Hindus were not very loyal to the Mughal rulers. So what the ruler have to do to make them loyal to themselves, they have to develop their faith in them. मतलब जनता का विश्वास राजा को अपने अंदर करना जरूरी था. तो what the rule Akbar has done, he started Deen-e-Ilahi in 1582 by blending the good points of all religions like Hinduism, Christianity, Jainism and other faiths with Islam. Deen-e-Ilahi was not a religion but a socio-religious path to bridge the differences among different communities. दीन-ए-इलाही क्या था? एक रिलीजन नहीं था, बट एक सोशियो रिलीजियस पथ था. मतलब सोशियो रिलीजियस पथ मतलब सामाजिक, और रिलीजन पथ मतलब रास्ता था जिससे डिफरेंट धर्म के लोग जिस पे चलकर, रास्ता क्या होता है, चल करके हम लोग एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, दैट इज नोन एज द पथ. तो दीन-ए-इलाही वाज आल्सो ए रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस पथ जिस पे चल करके डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में मिलते थे, जिसको फॉलो करके और आपस में मिलते थे और एक्सचेंज व्यू को करते थे और मिलजुल कर रहने की कोशिश करते थे. इसीलिए इसका नाम है सोशियो रिलीजियस पथ. In 1605, Akbar passed away. He was buried at Sikandara, 6 miles from Agra. Passed away मतलब उसकी अकबर की मृत्यु हो गई in 1605 में, और उसको सिकंदरा में, आगरा से 6 माइल दूर था, 6 माइल दूर था सिकंदरा. See here the map given on the Sikandara
ये सिकंदरा का अकबर का जो इन मेमोरी में जो बना हुआ है वो यहाँ पे देखिए, जिसको कि हम लोग कहते हैं कब्र कहते हैं, दैट इज द ग्रेवयार्ड। ये है, दिस इज द अकबर ग्रेवयार्ड। सिकंदर वाज सिकरी वाज, डू यू नो, सिकरी वाज नेम, फतेहपुर सिकरी सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। आप जब अकबर ने गुजरात को जीत लिया तो सिकरी, फतेहपुर सिकरी करके एक नया सिटी बनाया। Sulah e cool or universal peace and harmony was an important part of Dine Ilahi. Dine Ilahi का important part था। सुलह ए कुल मतलब सब लोग मिलजुल के रहें। Now in the Akbar court, Akbar was very much curious to know about, to get the different types of knowledge, to collect the information, because at he was deputed as a king in the very early age. He was just 14 years, but so he was unable to complete his studies. He want to collect knowledge. For that thing, he appointed different types of people, knowledgeable people surround him, and get information about the different fields. And those people were known as 9 gems. अकबर 9 जेम्स, अकबर के 9 रत्न के रूप में उन लोगों को हम लोग जानते हैं। वी रिमेंबर देम एज द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट। तो दी 9 जेम्स वेयर द नेम अकबर कोर्ट वाज फिल्ड विद टैलेंटेड मेन नोन एज 9 जेम्स और द 9 रत्ना। दे वेयर बीरबल, ही वाज नोन फॉर हिज स्टेटमैनशिप एंड विट। विट का मतलब हाजी जवाबी, बहुत अधिक जवाब ये देता था, इसीलिए उसका विट। अब्दुल रहीम खान, he was the son of बैरम खान, बैरम खान का बेटा था। और जैसे बहुत सारा रहीम का जो दोहा वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में, वो सारा दिस ऑलवेज रिटन बाय हिम इन दैट टाइम। सोचिए रहीम अकबर के समय का था और उसने लिखा था वाटर पर कि उसका कहना था कि अगला जो वार होगा, अगर दुनिया में लोगों को पानी को, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, ये उन्होंने कहा है। मतलब पानी को बचा कर रखे, पानी के बिना सब कुछ सुना है। तो आप सोच लीजिए उस समय वो कितने इंटेलिजेंट होंगे, उनको समझ में आ गया कि दिस रिसोर्स, दिस नेचुरल रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग और द पर्सन्स हु आर लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स ही हैज रिटन। he was very intelligent person. He wrote poetry in Hindi. His dohas are recited in India even today. Recite मतलब पढ़े जाते हैं। अबुल फजल, he was the great scholar and historian. He wrote Akbarnama and Aine Akbari. Faizi, he was brother of Abul Fazal. He was a great poet and philosopher. He translated the Bhagavad Gita in Persian. उन्होंने भागवत गीता का पर्शियन में ट्रांसलेशन बनाया था। भागवत गीता who is पीयूष, तुमको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे। I'm just telling one thing. This time I will not mute anyone from today class. लेकिन जिनका भी माइक अगर हमको ऑन मिलेगा, जो भी बिना मतलब का हल्ला करते, उनको वेटिंग रूम में, उस दिन क्लास में आप वेटिंग रूम में रहिएगा। दिस इज इन माई हैंड। जब जरूरत हो उस समय अपने माइक ऑन करके हमसे बात करिए। In everyday class, you people do not follow any rule. Mute your mic. माइक को सेल्फ म्यूट करके रखिए, एंड जब भी अदरवाइज those who will unmute themselves and started to make unnecessarily talking, I will put you in the waiting room for that day. You just remember it. Not a joke. I'm not joking. Faizi, he was the brother of Abul Fazl. He was a great poet and philosopher. Faizi who was Faizi? Faizi was the brother of Abul Fazl. He was a great poet and philosopher. He translated Bhagavad Gita in Persian. Persian में क्या? तो इससे क्या होता है? He has made it easy for the Muslim to read. Tansen, he was a singer and musician of exceptional talent. Exceptional मतलब आप तानसेन की तरह आज तक कोई भी ऐसा म्यूजिशियन इंडिया में नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। He was world famous for राग दीपक। राग दीपक मतलब एक ऐसा राग बजाते थे जिसे बुझा हुआ दीपक भी जल जाता था।
तानसेन का ऐसे, इसीलिए दिस राग वाज इज नोन एज रागा दीपक. राजा टोडरमल, ही वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, जो अकबर का हेल्प करते थे. और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो राजा टोडरमल ने ही खिलजी का पढ़ के, अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ के और शेर शाह का पढ़ के उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया था ड्यूरिंग द अकबर रीजन. राजा टोडरमल ने ही किया था. नेक्स्ट, राजा मान सिंह, he was one of the greatest general of Akbar court. जनरल मतलब सेनापति थे. he was a greatest general मतलब सेनापति थे. नेक्स्ट, राजा हुमाम, he was the well known physician. हुमाम कौन था? वेल नोन फिजिशियन मतलब डॉक्टर था, जिसको चिकित्सक हम लोग बोलते हैं हिंदी में. मुल्ला दो प्याजा, he was also a great scholar known for his ready wit. मुल्ला दो प्याजा का भी आप लोग कॉमिक्स वगैरह में पढ़ते होंगे. तो he was the मुल्ला दो प्याजा. स्कॉलर विद्वान भी था और इंस्टेंट आंसर भी देता रहता था. अब जहांगीर 1605 to 1627. Akbar was succeeded by his son Muhammad Sultan Salim. अकबर का जो बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद सुल्तान सलीम, he succeeded Akbar. And Salim, he ascended the throne in 1605 at the fort of Agra and assumed the name of Jahangir, holder of the world, and the title of Nuruddin, light of faith. Nuruddin का मतलब होता है light of faith. Akbar always addressed him as Sekhu Baba. अकबर उसको हमेशा क्या कहता था? शेखू बाबा कहता था. In 1606, Jahangir's son Prince Khusro escaped from Agra. Escape मतलब भाग गया. In 1606, Jahangir's son, whose name was Prince Khusro, escaped from why he had escaped from Agra. Jahangir followed him and defeated him at the Battle of Varawal. As the reason was, as many nobles were trying to make Khusro the emperor in place of Jahangir. That's why Khusro escaped from Agra, but Jahangir followed him and defeated him at the Battle of Varawal and punished him. Jahangir consolidated his territories. Consolidated मतलब इकट्ठा करना, जो मतलब जो अपने राज का जो भी कुछ भी था, जगह था, एरिया था, उसको consolidate मतलब अपने अंडर में लिया. And developed the administrative system that was introduced by his father. पीयूष कुमार कहाँ गया? ये लड़का पीयूष, इसको हम वेटिंग रूम में आज डालेंगे. वेयर इज पीयूष? पीयूष कुमार, दिस टाइम यू विल, दिस इज माय लास्ट वार्निंग फॉर यू पीयूष 7C. इज इट रिमेंबर? आप याद कर लीजिए. अब अगर आपका माइक अनम्यूट हुआ तो दिस टाइम यू विल बी द इन द वेटिंग रूम फॉर 2 days. आई विल कीप यू इन द वेटिंग रूम. I will not allow you to enter in the class. Maintain discipline during online classes is very compulsory. You people do not follow any rule. You want to do whatever you want, but that's not fair. You have to follow the rules. Just remember it. Piyush Kumar, this is the second chance. I'm giving you a warning. Keep yourself mute. अपने आप को म्यूट करके रखिए, all of you. चैट करना हो उस समय अपना माइक ऑन करके, then I will listen who is chatting with me, who has a problem. You are ready to, you are allowed to chat with me, but without my permission you are not allowed to chat with me. You have to take permission. Raise your hand, I will allow you, then on your mic and talk with me. Jahangir consolidated his territories and developed the administrative system that was introduced by his father. The court culture of the Mughals flourished under his rule. Court culture मतलब कोर्ट में किस तरह का बिहेव, राजा के दरबार में किस तरह का बिहेव किया जाता है, that was known as court culture. He had keen interest in gardens. Mughal painting reached its zenith. During zenith मतलब बहुत ऊंचाई तक पहुंचा. He married Noor Jahan, light of the, उसने जिस लेडी से शादी किया उसका नाम था नूर जहां, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड. जहांगीर रीस्टार्टेड द वॉर विथ मुगल राजपूत. अब जहांगीर के समय क्या हुआ? अकबर के समय राजपूत को अकबर ने दोस्ती किया था, बट जहांगीर है रीस्टार्टेड हिज वॉर विथ राजपूत. द अफगान अमीर्स ऑफ बंगाल अपोज द अथॉरिटी ऑफ मुगल. और बंगाल में जो अफगान लोग थे उन्होंने भी मुगल के अथॉरिटी को अपोज किया, मतलब उसका विरोध किया. दे हैव अपोज्ड.
The disturbance in the Deccan could not be controlled. और डेक्कन का जो डिस्टर्ब करते थे वो भी कंट्रोल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द फिजिकल इंडियाज फिजिकल क्या कहिएगा डिफिकल्टीज इन द पॉलिटिकल जो ये था जो इंडिया का कहिएगा कि स्ट्रक्चर है कंट्री का इट हैज अनेबल एनीवन टू रूल इन दक्कन फ्रॉम नॉर्थ एंड फ्रॉम डेक्कन टू नॉर्थ के तरफ से डेक्कन के तरफ से नॉर्थ भी नहीं कर सकते थे और फ्रॉम नॉर्थ टू डेक्कन भी इम्पॉसिबल हो जाता था दिस वाज द प्रॉब्लम ड्यू टू द इंडियन फिजिकल पॉलिटिकल कंडीशन नाउ जहांगीर डाइड इन द 1627 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग मतलब बहुत अधिक ड्रिंक करने की वजह से जहांगीर की मृत्यु हो गई आदर्श कुमार 7A why have you unmuted yourself? Will you tell me? Adarsh Kumar 7A. Or are you ready to be in the waiting room? I just want to know it. If you are ready, then raise your hand. पीयूष कुमार क्या चैट करके बैठे हुए हैं? मैम पेज नंबर वाई क्यों पेज नंबर अभी तक आपको नहीं पता चल रहा है? We are studying, you were not present in yesterday class and in today class while I have started the chapter. कुछ भी मन करता है आप लोग लिख देंगे पेज नंबर अभी तक पूरा क्लास अब खत्म होने जा रहा है 10 मिनट्स और बच गया है क्लास में तब अभी तक आपको पेज नंबर नहीं पता चला कि हम क्या पढ़ा रहे हैं पेज नंबर इज 124 the chapter is lesson 15 the Mughal empire Harshmit what do you want to speak 7B Harshmit Harshmit Prince Raj Harshmit what you want to speak Prince Raj what you want to speak Harshmit what you want to speak will you speak ऋषभ राज को आपको क्या करना है 7B वाले मैम एक क्वेश्चन था यस व्हाट इज द क्वेश्चन मैम जहांगीर प्रिंस खुसरो को डिफीट किया मैम तो प्रिंस खुसरो किसी एम्पायर में जाके मिल गया था no it is no information was given in the history books or in your book so I will मिला नहीं था वो लेकिन उसको तो प्रिजन में कर दिया होगा जेल का सजा दिया था पनिश दिया है तो पनिशमेंट दिया होगा तो वो कहीं जाने दिया ही नहीं हुआ होगा उसको What is the next question? और किसी का anyone has query anyone want to query anything no Harshmit have you any problem 7B Harshmit no okay now do you know page number 124 do you know Jahangir was able to conquer the fort of Kangra where even Akbar had not succeeded next do you know Jahangir was famous for his justice he set up a chain of justice of 60 bells attached to it it was made of pure gold one end was attached to the fort of Agra and the other to a stone column on the bank of river Yamuna अब Jahangir was famous for his justice he has made a chain of justice and which was attached with the 60 bells and एक का कॉलम जो है अपने किला से लगा दिया था किला मतलब जहां वो रहता था और दूसरा जो है यमुना रिवर के किनारे लगा हुआ था and those who seek justice anyone who wanted justice could pull the chain to draw the attention of the emperor राजा जो महल तक वो बजता था घंटी यमुना किनारे से बजा दिया जाता था and then king come out and listen the problems of the people Jahangir is also issued 12 ordinance for the better governance of the country और कंट्री को अच्छी तरह से चलाने के लिए जहांगीर हैड इशूड 12 ऑर्डिनेंस मतलब रूल लॉ और नियम इशू किया था शाहजहां
1628 to 58, 30 years he ruled. Khurram, the third son of Jahangir, जिसका नाम था खुर्रम, took the title of Shahjahan. His mother was the daughter of Uday Singh, the ruler of जोधपुर के राजा का, उसकी मम्मी हिंदू थी, शाहजहां की. शाहजहां had to face the rebellion of जुझार सिंह, a बुंदेला chief. rebellion मतलब विद्रोह को कहते हैं, and Jahan Lodi, an Afghan chief. Under Shah Jahan, the Deccan policy of Mughals entered a new phase. मतलब एक नए तरीके से उसने दक्कन जो प्रॉब्लम था उसको डील किया था. Is it clear? He annexed Ahmednagar and Daulatabad. Annex मतलब हरा देना, लड़ाई करके हरा देना. That is known as. तो Ahmednagar and Daulatabad both are of the southern state. Ahmednagar and Daulatabad. He forced the rulers of Bijapur and Golconda to accept his supremacy. Supremacy मतलब हमको मान जाओ. I am the मतलब your king and I am the ruler of India. In 1636, Shah Jahan retired to Agra and appointed Aurangzeb as a governor of Deccan. अब 1636 में अपने बेटे औरंगजेब को दक्षिण के तरफ गवर्नर बना करके और शाहजहां खुद का किधर चलाया, आगरा के तरफ, नॉर्थ के तरफ चलाया. द मुगल एम्पायर reached its greatest prosperity during the reign of शाहजहां. शाहजहां के समय सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर के पास पैसा, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, richness, that is known as the prosperity. His ministers were efficient and able. जो उसके मंत्री थे वो कैसे थे, बहुत अच्छे थे. He was an orthodox Muslim. Orthodox मतलब अपने रिलीजन को बहुत कड़ाई से फॉलो करने वाला, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, बट वाज फेयर टू नॉन मुस्लिम. लेकिन जो लोग जैसे इंडियन जो रहने वाले थे इंडियंस, वो लोग तो, हम लोग तो हिंदुइज्म, दे वेर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म. तो द किंग was the follower, though the king was the follower, King Shah Jahan himself was the follower of Islam, but he was fair to non-Muslims. He increased the magnificence of the court. Increase मतलब बढ़ाया, magnificence मतलब कोर्ट के ग्लोरी को बढ़ाया, magnificence मतलब brightness को बढ़ाया. The peacock throne, the Taj Mahal at Agra, the Red Fort at Jama Masjid in Delhi, and numerous other works of art and architecture testify his wealth as well as his aesthetic सेंस को. मतलब एस्थेटिक मतलब कि उसका जो कला के लिए जो उसका सेंस था उसको मतलब बताता है कि कितना अधिक उसको कला का नॉलेज था. ही इज नोन एज द इंजीनियर किंग. अब इतना जब चीज बनाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है, इंजीनियर किंग के नाम से जाना जाता है. ही वाज एन एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट. बहुत अच्छा लिखने वाला था. कैलीग्राफ मतलब राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी. He gave patronage to scholars, artisans and craftsmen. Patronage का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना. किसको किनको सपोर्ट करता था, हेल्प करता था, वो थे स्कॉलर, आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन, जो लोग की मतलब कि मैग्निफिसेंस बढ़ाने वाले थे, कोर्ट का ग्लोरी को बढ़ाने वाले लोगों को वो बहुत अधिक पैट्रोनेज सपोर्ट करता था. पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्लरिश्ड अंडर दिस इंटेलिजेंट एम्परर. इसके अंडर में बहुत आगे बढ़ा. इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल. Immediately his son started making preparation for capturing the throne. अब कहता है कि 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया एंड उसके तुरंत बाद, उसके बीमार पड़ने के साथ ही उसके जो 4 लड़के थे, he had 4 sons, they have started to fight together to become the king, capturing the throne. In 1658 Aurangzeb took over the throne and imprisoned his father. And in 1658 Aurangzeb, his third son was Aurangzeb, and he murdered his all the rest 3 sons, 3 brothers, and imprisoned his father Aurangzeb in the prison of Agra, in the fort of Agra fort. And Aurangzeb Shah Jahan died in the captivity in 1666 in Agra fort. आगरा फोर्ट में रहता था और ताजमहल को देखता रहता था. And about the Aurangzeb and the other and the relevant chapter, we will conclude it in our tomorrow class from the school. And please children, I want to say you one thing, that please learn the lesson carefully and underline all the hard words. And किन्हीं को कुछ पूछना है तो हमसे पूछेंगे अभी related chapter से जो अभी हमने पढ़ाया. If you have any query, you may ask. If you have any query, anyone has any query? Anyone has? I've unmuted you all. You can ask.
You can ask anyone. Anyone want to ask anything? No. Who want to ask? Anyone has any query? No. No. Now, Rishabh Raj, 7B. What is your query, Rishabh? Yes, Rishabh, ma'am. हाँ बोलो. What is your problem, Rishabh? Yes. मैम शाहजहां टॉपिक के सेकंड पैरा के सेकंड लाइन में जो एक लाइन है ना, अंडर शाहजहां द डेक्कन हाँ. पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एंटर्ड अ न्यू फेज. तो मैम इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब उस समय राजा कौन था? शाहजहां था. ठीक है. यस मैम. तो शाहजहां के राज में अंडर का मतलब हो गया, ये क्लियर हो गया. द न्यू फेज मतलब डेक्कन की तरफ. डेक्कन जो है अभी जहाँ जैसे हम लोग जहांगीर का पढ़े थे, तो आप लोग एक लाइन देखिए इसी सबसे ऊपर, ये द डिस्टर्बेंस इन द डेक्कन कुड नॉट बी कंट्रोल. क्लियर हो रहा है आपको? जहांगीर के समय मतलब क्या था, डेक्कन में जो डिस्टर्बेंस था वो कंट्रोल नहीं हुआ, और जब ये राजा बना उसका बेटा, तो ये प्रॉब्लम तो होगा ही. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब जब ये राजा बना तो उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप लिया उसी के बारे में लिखा हुआ है कि अंडर शाहजहां द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एंटर्ड ए न्यू फेज. क्लियर हो गया? यस मैम. समझ में आया? मतलब ही हैज टेकन सम अदर स्टेप्स टू कंट्रोल द डेक्कन. और उसी में आगे दिखे दिया है, देखिए ही एनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाद. एनेक्स मतलब अहमदनगर और दौलताबाद को हरा दिया. ही फोर्स्ड द रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा टू, और जो ये सारा साउथ का दक्कन का ही है, और जो बीजापुर और गोलकुंडा के जो राजा थे उनको फोर्स किया कि मेरे सुपरमेसी को तो आप लोग मान लीजिए. एंड फिर क्या किया, 1636 में शाहजहां रिटायर्ड टू आगरा. खुद क्या किया, आगरा वापस आ गया. एंड अपॉइंटेड औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, और जो उसका बेटा औरंगजेब था उधर डेक्कन का राजा बना दिया. मतलब खुद अपने राज्य को दो पार्ट में बांट दिया. नॉर्थ की तरफ खुद चला गया और औरंगजेब को किधर कर दिया, साउथ की तरफ. डेक्कन. इज इट क्लियर? यस इसी को मैम. बता रहा है. और एनीवन हैज एनी क्वेरी? और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? इट्स ओके नाउ. Anyone who wants to ask question? No. Okay. Okay, okay, children.